ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you to today's Bhagavad-Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं चौथे अध्याय का। We are studying 4th chapter, verse number 2. श्लोक में भगवान ने In the previous verse, जो योग जिसका वर्णन इन्होंने पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में किया, the explanation of yoga that he had given in 2nd and 3rd chapter regarding that, he said how सूर्य से आरंभ he began this yoga parampara by instructing Surya Dev, and he gave it to Manu, and then Manu gave it to Ikshvaku, and this is how the parampara continued. So in that chain, he continues. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। राजर्षियों ने इस Translation. ज्ञान योग को The royal sages thus understood this yoga of wisdom received through sacred tradition. को संतप्त करने वाले O scorcher of enemies, over a great lapse of time, this yoga was gradually lost to the world. तो यहाँ
यहाँ भगवान परंपरा की बात कर रहे हैं So here Bhagavan is talking about क्योंकि parampara because सत्य जो है truth वो कभी पुराना नहीं होता is never और old कभी नया भी नहीं होता, and never new also. इसलिए इसको उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था That's why in the अव्ययम previous verse he referred to it as avyayam. योगम प्रोक्ता मया प्रोक्ता अव्ययम। तो So अव्यय का मतलब है जो विनाश नहीं avyaya होता, means that which is सदैव never destroyed, चल रहा है। and never तो destroyed इसीलिए means इस युग में मतलब कि इस मनवंतर में क्या परंपरा है उसके बारे में बोला उन्होंने। तो परंपरा का मतलब होता है वाह, परम और अपरम। परम माने वो so दूसरी तरफ parampara is param and जैसे aparam. Param means the other ऊपर से side, नीचे, नीचे aparam से this side, इधर, meaning from इसको top to परंपरा down. कड़ी जिसको It's बोलते like हैं, a chain. संतति प्रवाह, ये शब्द हैं परंपरा के। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है Like Ganga और appears वहां से from Gangotri and समुद्र coming में from there, जाकर it मिलती goes है, and finally उसमें से mixes in the ocean. वो पानी So the parampara of the water बहा आता है। continues because the water that is तो ये flowing. गंगा नदी है, कल भी मैंने गंगा देखी So you थी। say that this is Ganga. Earlier, तो so I saw this Ganga. Now also I'm seeing Ganga. बहा है तो जो कल But the water that is जिस flowing, जल में कल आपने so स्नान किया था the water in which you took उसमें bath yesterday or बर्फ you saw जैसा yesterday, in चिपचिपापन that होता same है। water you cannot take bath today तो because that water has moved देखने में ऐसा ahead. लगता है कि वो But when you वही see, it प्रवाह है, appears that it is same only because the flow is या आप कह लो continuing. कि ये धारा है Similarly, the flow of knowledge या एक ज्योति or जलती the है light जिसको of knowledge परंपरा बोलते हैं। that जैसे दीपक continues, जलता है तो उसका like जो प्रभाव है the वो हमको ऐसे लगता है कि lamp, ये light of the lamp, स्थायी है, it appears that it is constant, वही है। और but जब it is तीसरी constantly आई दूसरी burning. आई चौथी आई तो ऐसा लगता है कि वो वही है। So it appears that it is same तो इसी only. को परंपरा बोलते हैं। So this is called तो इसी parampara. प्रकार ये ज्ञान की भी एक परंपरा Similarly, है, this is the parampara of वंशावली की knowledge. परंपरा होती है, Like परिवार की we have पिता the के पिता से। parampara and the dynasty. तो इस ज्ञान की परंपरा का कहने का मतलब है कि ये जो सत्य है So this Gyan ये Parampara, the बदलता नहीं parampara है of knowledge, means और that पहले the था truth लेकिन never changes. इसका प्रवाह It was there earlier also, लुप्त हो गया, but जिसकी चर्चा for the time being, it was समय lost. के अनुसार That Bhagavan is discussing that. इसका लोप हो गया। और लोप होने का क्या कारण है And why it was lost, तो उसको समझना होगा। that is what we have to प्रथम वो understand. कहते हैं कि परंपरा So जो first of all, राजर्षि he काल में says होती है, that the Rajarshis, the royal sages, ऋषि received this yoga of wisdom through parampara. मेहनत किया, कहते हैं राजर्षयो विदु। He is talking about क्योंकि Rajarshis, पूर्व काल में जब meaning in the old राजा time लोग होते थे तो उनका when एक the kings मूल were there, कर्तव्य होता था कि so their उनके समाज में primary duty धर्म का पालन होता रहे। was to ensure that the इसलिए भगवान society इसलिए कह रहे continues to हैं follow dharma. धर्म Like की Bhagavan गाथा speaks इसमें in this वर्णन की chapter गई कि मैं that धर्म की I संस्थापना करने appear के in लिए this world मैं to आया हूँ। establish dharma तो in इसी every प्रकार yuga. से जो So राजा in लोग the थे same way, the वो kings, धर्म की स्थापना करना उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। one of their main duties तो was to ये establish कोशिश करते dharma, थे कि समाज to में make sure लोग that in the धर्म को करते society रहें। people follow dharma. और अगर राजा भ्रष्ट हो And जाएगा if the king becomes तो corrupt, समाज भी, ये कहा जाता था, प्रजा समाज भी भ्रष्ट हो then जाएगा। the society will also क्योंकि become अगर राजा corrupt. के पास में Meaning, धर्म if का ज्ञान नहीं रहेगा the king does not have तो knowledge समाज of भी उसी प्रकार का dharma, रहेगा। then society will तो also समस्या emulate जो है the वास्तव king. में राजाओं से आती है। So the problem begins from the तो kings. इसलिए पुराने जमाने के जो राजा लोग थे वो अध्ययन That's why in the बहुत old करते थे, times the kings, शिक्षा they were बहुत very करते थे, devoted to study of Shastra. They were taught Shastra विद्वान विशेष from रूप से। childhood itself and especially on यहाँ तक dharma. कि To बृहदारण्यक the extent उपनिषद में that कथा है कि in Brihadaranyaka Upanishad there is a अनेक ऋषि katha लोग जो हैं वो that दूसरे ऋषियों के many पास में जाकर ज्ञान rishis, प्राप्त करते थे। they used to go to the Rajarshis, the यहाँ royal तक कि the kings and take knowledge from एक them. राजा की कथा है कि
there is a story of Ashwapati king, how six rishis went to him and took knowledge, received knowledge from the king. And the Ashwapati king, he spoke a statement ना नाहित अग्निर्ना अविद्वान स्वैरी स्वैरिणी कुतः। और राजा कहता है कि मेरे राज्य the में king says कोई that चोर नहीं है in my और कोई आलसी व्यक्ति नहीं है, in my kingdom there is no कोई thief, असत व्यक्ति there is नहीं no है, lazy person, कोई there is no शराबी नहीं है, irreligious person, कोई ऐसा नहीं no है जो drunkard, अग्निहोत्र ना करता हो, there is nobody who doesn't do Agnihotra, कोई ऐसा नहीं है जो विद्वान ना हो, there is nobody who is not intelligent, और कोई ऐसा नहीं है जो गृहस्थ होकर दूसरी स्त्रियों से संपर्क करता and हो। there is nobody who, being a और grihastha, इसलिए mingles with हमारे others' यहाँ wives also. वेश्या नहीं है, In my kingdom, there is no क्योंकि prostitute. आदमी स्वयं ही इतने धर्मनिष्ठ है, तो वेश्या क्या करेगी, उनकी Because आवश्यकता when the नहीं। person himself is so much तो ये devoted to बृहद अरण्यक का dharma, वाक्य है, what will the जो कि हमारे prostitute उपनिषद do? को बहुत प्रामाणिक माना जाता है, श्रुति है And उसमें। this is from Brihadaranyaka तो Upanishad, इससे which is पता a very चलता है कि पहले authoritative लोग कितने book, धार्मिक होते थे part of Shruti. और उनके कारण So से we राज्य understand उनका that the kings were बहुत so प्रभावशाली था। religious, और आज भी हम समझ सकते हैं and कि under them the हमारे society was also so religious. And लोकतंत्र है जो today also we can understand the उसके republic लिए that अगर we have. हमारे नेता In लोग that republic also, if our तो प्रजा पर कैसा leaders, असर पड़ता है, if they are जब religious, वही आपस में then it influences the भ्रष्टाचार करते हैं, झूठ citizens. बोलते हैं, But if they only become corrupt, speak धर्म का नाश lies, करते हैं, तो लोग भी and उसको do स्वीकार irreligious करते हैं। activities, then other people also emulate them and they also तो become इसलिए यहाँ irreligious. राजर्षि शब्द का That's प्रयोग why किया here है, the word ऋषि Rajarshi is ब्राह्मण used by Bhagavan. राजर्षयो विदु। तो ऋषि का मतलब होता है जो So दृष्टा होता है, Rishi means जो drashta, मंत्र दृष्टा है न तो करता रहा, यानी कि ऋषि meaning वो है जो that वास्तव में Rishi किसी is ज्ञान को one उसने who, आत्मसात किया है, who has imbibed that जिसका knowledge, उसको अनुभव है, who has experienced परंतु the वो knowledge. किताबी ज्ञान नहीं है It कि is हमने not पाठ पढ़ just लिया, theoretical bookish knowledge, श्लोक याद कर लिए, just मंत्र memorizing मुखस्थ कर लिए, verses, but no जो आजकल experience. हम प्राय यूट्यूब Like पर देखते हैं, nowadays, what we see mostly छोटे on बच्चे YouTube, या तो प्रवचन even देते small हैं, children, they give lectures. तो उनको ज्ञान तो है, So they have लेकिन क्या knowledge, उनको अनुभूति है, but do they have experience? क्योंकि Do they have जब तक realization? ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है तब वो Because उसी प्रकार until and से unless चलते you रहते हैं, realize the knowledge, then what happens? लेकिन It's जब like a अनुभूति ठीक parrot से आती है repeating. तो But आदमी when ज्ञान we के अनुसार ourselves चल face the या problem, उस ज्ञान के then we अनुसार आगे work बढ़ता है। according to our samskaras, not तो according एक to the बात याद knowledge रखनी that we have चाहिए कि जो received. And it is बड़े often ऐसे seen कथावाचक that those who are big प्रवचन katha, करता है, many times those who are big katha vachaks, they give उनकी व्यक्तिगत big जीवन lectures देखो, to huge और crowds. कुछ If you see their personal lives, व्यवहार देखने then को मिलता है। you will see तो some इसलिए irreligious कहना अच्छा behavior, होता है कि जब समाज को ashastriya behavior in इसके their बारे में life. पता चलता है, And when society comes to know तो about it, उसी से फिर they lose faith. ये जो भगवान कह रहे हैं And कालीन है महता योगो नष्ट परंतप, वो योग फिर विनष्ट हो जाता है। विनष्ट का मतलब लुप्त this हो is जाता how है, the knowledge क्योंकि इसी योग becomes को lost भगवान to ने the world. अव्ययम कहा, Because this is the knowledge for which Bhagavan कि इमम in the पुरुषम previous verse जो said it is avyayam, अव्ययम। imperishable. तो अव्ययम का मतलब तो ये होता है जिसका कभी व्यय So नहीं होता, avyaya कभी means विनाश नहीं that होता। which is never और perishes. यहाँ पर कहते हैं कि योगो But नष्ट परंतप, here he says yogo तो nashta. इसमें तो विरोध दिखता है। So then it पिछले श्लोक में looks like a जिसको अव्यय contradiction. कहा, In the उसमें previous इस verse, he said ज्ञान that को this नष्ट knowledge कर is दिया, avyaya, imperishable. But here he says that this knowledge was lost. या तो It, वो नष्ट हो it गया was या अव्यय, destroyed. दोनों एक साथ तो संभव So नहीं है। either it will be imperishable or it will be तो destroyed. इसलिए How विनष्ट can शब्द का it be मतलब ये both? होता है कि जो That's why विनाश नहीं होता, here उसमें this विनोद नहीं nashta होता। does not mean destroyed actually. It was lost जैसे कोई to the चीज world. आपके कमरे में ही रखी Like हुई है, लेकिन if there is something in your आप उसको home, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, but you are not able जेब में to रखी हो, find it. It may be in वो your वस्तु तो pocket. वही है, लेकिन आपकी
So दृष्टि से the ओझल है, object is there तो only, उसका मतलब होता but है it अदर्शन। is lost from your vision. नस धातु अदर्शन अर्थ में, In Sanskrit, Nash कि Dhatu means उसका वो नहीं adarshan, है अभी, meaning it is not there in front of उसकी our वैल्यू vision. खत्म हो गई It है, is not that the अदर्शन object है। ceases to exist altogether. तो ये नष्ट क्यों हो जाती है, So then why does इसको it become समझना भी lost to the जरूरी है। world? Understanding that is also important. ये परंपरा है, और फिर ये कहते हैं कि परंपरा जो है समय के अनुसार नष्ट हो गई। This is a parampara, and then you say इसका that कारण मनुष्य हैं, over a lapse of a अब जैसे period of time it was धारा lost. चल So रही who is है, responsible for this? Human beings are responsible आज for जैसे this. गंगा जी बह रही Like है, अब तक Ganga लोग is स्नान करते flowing थे, since thousands of आज years, who knows नहीं since कर how रहे, many thousands of years. तो उसकी परंपरा तो विलुप्त नहीं हुई। So the parampara was अगर not आप बांध lost. भी बांध दोगे तो ठीक है, पानी Even if you create a धीरे धीरे dam, पानी निकल के परंपरा तो उसकी निकलेगी कहीं से। पानी को तो बिल्कुल आप रोक नहीं सकते, उसका the लूप water होता will रहेगा। somehow or other flow. You cannot stop it तो altogether. यहाँ क्योंकि ये ज्ञान की परंपरा है, So तो here, ज्ञान का मतलब since we are talking about a Gyan एक parampara, को दूसरे व्यक्ति से इसको सीखना पड़ता है। meaning one person has to learn it और ये from सीखने another का मतलब person. केवल इतना ही नहीं है कि कोई And चीज हम learning मेमोराइज doesn't कर लें। just mean memorizing. हमारे यहाँ वेदों को श्रुति कहते हैं, क्योंकि वेदों को Like वेदांत बोला जाता in था our पहले। tradition, Vedas are called Shrutis because they are heard and और memorized. ब्राह्मण लोग थे जो उसको अपने स्मृति में रखते थे, तो सुनकर And the Brahmanas सीख used नहीं to keep सकते, them in their smriti, उसका उनको अर्थ in their मालूम नहीं होता, memory. लेकिन शब्द उनको पता है। Even if they तो don't know the ये meaning, शाब्दिक परंपरा they है। know the words. यहाँ So उस that is प्रकार की a परंपरा की बात Shabdik नहीं कर रहे हैं। उस parampara. प्रकार की परंपरा से भी वेद की रक्षा Here हुई, we are not talking about that parampara, of course, but that parampara is also क्योंकि important because Vedas were ज्ञान received की through that parampara. तो शब्द But का here ज्ञान Bhagavan होना is चाहिए, talking about the parampara of जिसकी परंपरा knowledge, आगे तक चले। about the और meaning ये of those परंपरा जो है, words. जब व्यक्ति That parampara should continue. सुनकर And उसको ठीक this से समझे, parampara can continue only when the person hears and और understands properly उसका फिर अनुभव करे, and then तो उसके लिए experiences it. हमें साधना करनी So पड़ती for है। that we have to do sadhana. और वहीं पर समस्या आती है, क्योंकि And साधना there थोड़ा the problem lies मेहनत से there करनी only पड़ेगी अपने because आप को। sadhana involves hard work, austerity, और विशेषकर control of जो राजा senses, लोग हैं, उनके and यहाँ ये सब especially चीज़ें उनको उपलब्ध हैं, kings had so much उनको इंद्रिय निग्रह wealth, करना बड़ा कठिन affluence. काम है। So for them, controlling senses was even more difficult. So if the तो फिर kings become entangled in sense enjoyment, लुप्त हो जाएगी। then the parampara of knowledge will be भगवान ने lost पहले कहा था कि because Bhagavan had told क्षुद्र earlier त्वचा only. गुण समुद्भव महासनो महापापम विद्धेयनम यह वैरिणम। तो ये जो कामनाएं हैं, ये फिर So हमारे these ज्ञान को, desires, हमारे विवेक को they ढक लेती है। they cover our knowledge, our ज्ञानेन आवृतम wisdom, देहम our sense of विद्यानामृतम। discrimination. तो फिर व्यक्ति मोह में पड़ जाता है, Then the उसको कुछ person समझ नहीं becomes पड़ता। bewildered and loses ये his जो योगा discrimination. है जिसकी वो बात कर रहे हैं, And the yoga that ये Bhagavan is वास्तव में ये speaking of, विवेक ही है। it is actually व्यक्ति को कहते हैं बहुत हुआ discrimination only कि मैंने इसको बोला। because he is telling वो ये जो Proktavan means I है, ये spoke. आगे भी और So कहना what he चाहते हैं spoke was same only what he spoke कि till अभी now. तक जो बोला है वो And further also he has more केवल to विवेक speak. ही बोला But है, whatever उसमें he has कोई spoken of till now देह में he has क्या spoken है, about sense of इसके पीछे discrimination हमको between spirit and matter फलों में आसक्त ना होकर काम करना and चाहिए, how we should work कर्म without करने being के लिए attached करना चाहिए। to the results of तो इसी karma. पर अभी तक उनका बल रहा है। So this is what he has और ये विवेक stressed हमको till प्राप्त now. है, And we all have this sense of discrimination हर एक व्यक्ति जानता है because कि मैं every person knows अलग हूँ, that I am दूसरे different. से। I am different from जितनी भी everything else. वस्तुएं मेरे चारों तरफ हैं, Whatever is there उनसे मैं around कुछ भिन्न me, हूँ। I am different from all that. मैं परिवार में अपने परिवारीजनों से भी भिन्न हूँ। In my family also, I am different from all तो other इस पर अगर हम members. थोड़ा And then, और गहनता से विचार करें, if we तो जब reflect मैं रात more को सोता हूँ carefully, तो then मुझे we'll अपने understand शरीर that पर ध्यान नहीं रहता when है, I sleep at the तो night, इसका मतलब मैं अपने then I शरीर am से not अलग हूँ। aware about my body also.
That means I am different ये from my गुण body also. हमारे अंदर सबके है स्वाभाविक। So we all have this sense of लेकिन अज्ञानता के discrimination कारण ये ढक within जाता us. But due to desire, it gets covered. है और फिर हम देह में आसक्ति के कारण And इंद्रियों then, में due लिप्त to होने के कारण attachment to the body, इस we योग का become ये नष्ट हो जाता entangled in sense enjoyment. And then है। तो ये है कि इसको परंपरा से the सीखना parampara पड़ता of है। knowledge is lost. तो Another परंपरा point से is that सीखने की this और has to be learnt from parampara. So then the question is why मतलब यही है कि इसको there सीखना deviation, पड़ता है। why deviation happens in तो parampara? मतलब ये है That is because you have to actually learn कि it जैसे from the parampara. Not that चीज़ें आपको like उपलब्ध हैं डू इट today योरसेल्फ। you have nowadays lot जैसे of आप this do it yourself पुस्तक ले लीजिए, methods. कुछ You वीडियो take उपलब्ध हैं, books or some videos are there, कुछ प्रवचन उपलब्ध हैं, उनको or some सुनिए, lectures सुनकर आप are सीख there कर सकते हैं। here that, आजकल and you पढ़ने can की do it सुविधा भी आपको yourself. मिल जाएगा। Almost for everything nowadays you will find do it yourself लेकिन ये विद्या techniques. जो है ये स्वयं करने वाली है नहीं, इसको सीखना But पड़ता है। this knowledge is not a subject of तो do ये it yourself. आध्यात्मिक विद्या It है, has to be learnt. भौतिक नहीं है, ये शरीर It is संबंधी not नहीं है। material knowledge. It बाकी is जितने spiritual और हैं knowledge. It is not related to उसमें body. आप इसको स्वयं कर सकते हैं, All the other knowledge वो for which शरीर it is संबंधी said you can do it yourself, they are all related ज्ञान to है। body, or they are, ये that is ज्ञान material knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान है But this knowledge is spiritual और knowledge. इस ज्ञान का हमारे अंदर कोई संस्कार नहीं है, हमें अनुभव नहीं But है, we do इसलिए not इसको have सीखना any पड़ता है। prior samskara इसको of this सीखने के लिए knowledge. जो व्यक्ति We have to पढ़ने से learn it, कैसे आप इसको सीख सकते हैं, केवल पढ़ने and से you तो can सीखा learn नहीं it जाएगा। only from one क्योंकि who जब तक knows. पढ़ेंगे By self study, we तब तक cannot नहीं understand समझेंगे। it. Because if you do self परंपरा study, then we will derive only that meaning what we already know हम it. जब भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं या देखते Whenever we हैं learn something new or we read तो something उसको new, हम अपने पूर्व संस्कार से ही then समझते हैं। we understand or interpret it according to क्योंकि our हमारे संस्कार previous हमारे पूर्व samskaras only. स्वरूप के तो हैं नहीं। Our अगर previous पूर्व samskaras are जन्म not संस्कारों के like ढंग से या that पूर्व of जन्म में the पूर्वों के spiritual ढंग से knowledge, because if it would have been like हम that, बंधित हैं, we would not have even taken इस birth. ज्ञान की We would आवश्यकता है। already have been liberated. Then why do तो we हमारे need to अंदर learn itself? इस योग के, इस ज्ञान के So संस्कार नहीं है। we do not have the तो samskaras इसको of this अगर हमको gyan, सीखना है of this yoga of तो knowledge, of जब wisdom. इसको सुनेंगे, So we have to learn it, समझेंगे, and when we तो learn उसको it, when we समझेंगे hear अपने and we पूर्व learn it, संस्कारों के अनुसार ही। and when we understand, we will understand it according to our samskaras यहाँ पर only. ही समस्या आती है, So this is where the problem lies. क्योंकि जब तक जो सिखाने वाला है वो कितना ही प्रयास करे, वो शब्दों का प्रयोग करेगा सिखाने के लिए Because the teacher, और उन no शब्दों matter का how much he has to teach ऐसा वो by using ज्ञान words रखता only, है and the meaning that कि he ऐसा wants to विश्वास convey करता है through those words, कि if अगर we हम do उसको not अपने take अनुभव that में प्रयोग meaning, करेंगे, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग but तो हम भी करते हैं, we तो गत्वा वो take शब्द the हमको meaning प्रयोग according to करेगा, our वो उन शब्दों experience का only. प्रयोग करेगा The जिनको हमने teacher सुने हैं, जिनको हम will जानते हैं। use words and we will hear those ये words which आध्यात्मिक we विद्या already का know. है, इसका If he लाभ uses such words which हम we don't इसीलिए know only, then we will not even ध्यान able से to करते हैं। understand what he is speaking. और अगर हम उस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं और वो If हमको we do not know the समझाएगा, meanings of those words, and केवल if he doesn't explain the meaning, समझाएगा, वो how हमको shall we understand? उसी से समझा सकता है जिसको हम जानते हैं। Because he can explain using those इसलिए words ये only that we बड़ी already समस्या know. है आध्यात्मिक That's विद्या में। why on the spiritual path, तो this is इस a बात big जानने के problem, that whatever we want to इसको गहन understand, समझने के लिए हम अपनी शब्दावली का ही प्रयोग करेंगे, in अपने order to संस्कारों का understand, नहीं, we will use our vocabulary only, और we will हमारा use our samskaras संस्कार only, हमारी and शब्दावली से our नहीं हो experience, सकता। our samskaras, they are तो all हम आध्यात्मिक material. ज्ञान कैसे समझ सकते So how can we understand हैं? इस spiritual समस्या का subject matter समाधान using these बहुत words? सूक्ष्म है और इसी के So कारण the ही solution to this ये problem नष्ट हो जाता is है very subtle, समय के and this is why the कारण parampara gets कि lost. बहुत समय बीत गया है और इस समय के बीत जाने के कारण ये Because परंपरा नष्ट Bhagavan होने की said बात हो that गई lot of time has passed and this parampara has been किसी भी lost. प्रकार से विच्छेद आ गया। तो उसका मूल कारण It is यही like है। it has broken. So this is the तो main इस reason. परंपरा को रखने के लिए So in order to maintain the एक है, parampara, then one thing इसको कहते is हैं श्रद्धा। required, that is called Shraddha.
Now this Shraddha is अगर alaukik. श्रद्धा होगी तो फिर व्यक्ति जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार उस बात को पकड़ सकता है। If Shraddha is there, then the यदि student कोई can catch hold of that knowledge अलौकिक based on the Shraddha. श्रद्धा And this Shraddha is not material, it जैसा is हमारे शास्त्रों में Shastriya, it वर्णित is है, spiritual. So, यस्य like it देवे is said in our Shastra, यथा देवे तथा गुरु तस्य यथा प्रकाशन्ते महात्मा, कि जैसी देवता में भक्ति है वैसी भक्ति जब गुरु में होगी the kind of bhakti which is there in the Devata, that level उस of समय फिर ये जो bhakti or आपके Shraddha, शब्द if you हैं have in the Guru from whom you are learning Shastra, सुन रहे then हैं whatever you are hearing, यथा प्रकाशन थे, तो फिर ये प्रकाशित होते हैं आपके हृदय में। whatever you are hearing, ये its artha अलौकिक will ज्ञान be है, revealed in the heart. जो This is साधारण ज्ञान प्राप्त something करने की divine, प्रक्रिया से भिन्न है। which is different from तो the ये ordinary रहस्य है process of receiving knowledge. जिसको अगले श्लोक में This भगवान is अपने the समय में mystery, which ये will रहस्य Bhagavan will बताते explain हुए in the next verse also. He will say that this is उल्लेख rahasya. किया है अगले श्लोक। तो यही रहस्य He है, himself uses the word rahasya कहने in का the जो next रहस्य verse. है वो ये है So this is the कि secret of जिसको receiving this अपने knowledge, हृदय that का the केंद्र बनाना disciple पड़ता है। should have one-heartedness with the जैसे Guru, बिजली घर से आपके घर like में आती है electricity तो उसका लिंक moves to वायर your से होता home. है। It is connected directly through the wire. अगर वो लिंक बीच में टूट जाए If that link तो बिजली नहीं breaks, आएगी। then the electricity will not तो be इस प्रकार transferred. ये लिंक रहता So है सबके साथ similarly, में, और गुरु Guru भी there वही is होना चाहिए जिसका गुरु है वो परम there is पुरुष link, है, and Guru also should be such who has his own Guru, and that Guru has his own परंपरा से Guru. आती है। So then this knowledge flows in an तो uninterrupted ये जो fashion. श्लोक है, मंत्रे So in तत्तदीये Manusmriti there is a verse. ये भेषज गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। उन्होंने कहा है कि जैसी आपकी So भावना, in भावना मतलब श्रद्धा, Manusmriti उसी it is अनुरूप saying आपको सिद्धि मिलेगी। that यानी कि you will get the result according to your जैसे यहाँ Shraddha. हम अपने गुरु के विषय के बारे में कर रहे हैं, तो देवता हो चाहे द्विज हो या मंत्र हो या So whether तीर्थ it हो, is Devata, the Dvija, the अगर उसमें mantra, श्रद्धा नहीं the है तो वो tirtha, काम नहीं करेगा। if we do not have Shraddha in the mantra, हम mantra will not show its हम effect. सब जानते हैं कि Tirtha, we stay in भगवान Vrindavan, अपना we know that आध्यात्मिक this is the धाम है, personal वहाँ dham पर of विराजमान है, वहाँ Bhagavan. से कभी जाते नहीं। तो Bhagavan कहने का जो हमारी is श्रद्धा नहीं है तो eternally वो living ऐसे here. लगेगा जैसे But if we do not have जैसे Shraddha, we will see this dham like an इसलिए ordinary बार बार ये place. कहते रहते हैं कि And क्या that's करें, why people come here संसार and में इतनी then गंदगी है, complain what is special in this place. There is so much of क्योंकि pollution, dirt. जो इसके नीचे छुपा हुआ है वो तो हमारे Because what is hidden beneath all this, वो हमारी श्रद्धा के अनुरूप ही होगा। we cannot तो experience यादृशी that. भावना We will experience that only according to our यस्य Shraddha. सिद्धिर्भवति तादृशी। तो जैसी भावना जैसी श्रद्धा होगी So according to your bhavana, वैसा ही Shraddha, हमको अनुभव होगा, वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। accordingly you will हमें get the फल की experience, प्राप्ति whether होगी। it is of mantra or tirtha or guru or इसीलिए shastra. हमारे यहाँ गुरु That को is why इतना महत्व दिया गया है। in our भगवान ने कहा culture, है in कि our गुरु को tradition, जानिए, Guru is given such a great मेरे importance. आचार्य अपने Bhagavan आचार्य says रूप में आ that जाते हैं। I am the Acharya. तो इसका दुरुपयोग भी Bhagavan होता है, himself appears as Acharya. इसका भी लाभ And होता है। this verse जैसे is वास्तव misused में also. Many people श्रद्धा take के undue लिए जो advantage of प्रक्रिया this की है, verse. But the इसके Siddhanta is अलावा this और कोई only. दूसरा रास्ता This नहीं है। method is this only. There is no other way. और अगर हम इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि इस And प्रक्रिया में if we चलने do के not लिए understand this, लोग आध्यात्मिक it's मार्ग चलते हैं, difficult. लेकिन In वास्तव this में path, it is very difficult to अगर have देखोगे तो Shraddha. श्रद्धा People come on this नहीं है। path, but if you check properly, you will समझने की see बात ये है, there is no proper Shraddha. This सुनने is में the बात real थोड़ी कठोर point. लगेगी लेकिन It वास्तविकता may ऐसी है। sound very और उसके कारण bitter, से फिर but हमें this is the bitter जो truth. परंपरागत ज्ञान And है that is why, ये प्राप्त due करना to lack मुश्किल of है। Shraddha, we do not get this knowledge in the तो इसलिए parampara. हमारे गुरु महाराज बार बार इस बात को That's कहते why थे, प्रभु my Guru Maharaj आपको always एक used to ऐसे say एक करना पड़ता है that Prabhu, you जिसमें have आप to एक के स्थान पे establish जैसे one-heartedness with the ही Guru. एक धारा, So it is जैसे बिजली का करंट like the flow of the उसको current. उसमें मिलाओगे तार के साथ में So तभी if you चलेगा। connect the wire, तो उसी then the प्रकार से electricity will ये flow. ज्ञान प्राप्त होता है। Similarly, this knowledge is अर्जुन को क्यों received ज्ञान in प्राप्त the हुआ? parampara. So why did Arjun receive जैसे knowledge? कोई कहेंगे
Because Arjun, like Bhagavan will say in the next verse, कि आप मेरे भक्त हैं, that you सखा are हैं, my bhakta, you are my sakha. इसलिए ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। That's why तो you are इसलिए qualified to भगवान receive कहते this हैं सैव knowledge. मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। आज मैंने वही अति प्राचीन योग Translation: तुमसे I कहा, have spoken that very जिसे ancient yoga to you today because you are my सर्वज्ञ है devotee परम and रहस्य friend. है। It is certainly ये the देखने में supreme श्लोक secret. बहुत आसान है So, और this एक verse मिनट में appears to be सब very समझ में simple, होगा, and we might have heard it thousands of times and recited it रहस्य है, thousands of इसको times. समझना भी एक रहस्य है। But understanding this verse is also और a भगवान जो rahasya, यहाँ it's a रहस्य शब्द secret. का प्रयोग उस ज्ञान के लिए Bhagavan कर रहे हैं कि is using the word rahasya जो or मूल secret रहस्य है, for this तो ये knowledge, रहस्य वाला श्लोक बता रहा है। but ये श्लोक this से ही verse itself is हमें also a ये समझ secret, में आ जाए कि वास्तव में क्या that कहना क्या we चाह रहा है। understand it or know that what is he तो exactly कहते trying हैं कि to वही say. योग जो मैंने विवस्वान को कहा था सैव, So he says that same सत्य को yoga कोई which नई I बात had नहीं told to बताई, Vivaswan, meaning the क्योंकि same thing. सत्य कुछ नया He नहीं is not बताता telling है, something new because truth is neither old nor new. एक जैसा ही रहता है। नास्तु Truth is always परिवर्तते न same. भावो विद्यते सतः, सत्य तो बदलता नहीं है, Truth does not तो उसी change. सत्य को So वो that बता रहे same हैं। truth, he is telling that same truth कोई नया नहीं है। बहुत बार लोग आकर is कहते हैं nothing new. Many कि times आपका people क्या come कहना and है। say that what is your opinion regarding this? मेरे मत की कोई कीमत नहीं है, So my opinion has no value क्योंकि सत्य मेरे मत पर निर्भर नहीं करता है। किसी because लोग truth बहुत does मानते not हैं, depend on my अधिकतर opinion. लोग इसको मानते हैं, इसलिए ये ठीक होगा। Truth does not depend on majority इससे opinion. सत्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको एक व्यक्ति माने चाहे लाख व्यक्ति माने, Whether one person accepts the truth or lakhs of people accept the truth, बहुत लोग मानने लगेंगे truth सुनने को remains तो वो same सत्य only. नहीं हो जाएगा, Truth does not become लेकिन truth बिना just because मानने के majority सत्य accepts नहीं it, हो जाएगा। and it does not become false if nobody is इसलिए accepting दूसरे it. शब्दों में कहा कि So नास्तो Bhagavan has told very परिवर्तते न clearly भावो विद्यते सतः, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो there is अभाव never है any वो सत्य abhava नहीं of है। truth, and what is having abhava, it cannot be truth. तो इसलिए कहते हैं सैव मया ते अद्य योग प्रोक्त, वही योग मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पुरातन है, So he is पुरातन telling काल that का Bhagavan is telling that I am telling that ज्ञान है, same yoga to you, महत्व चीज है। which is very ancient, कहते हैं meaning it is पुरानी very चीज है, important. 1000 पुरानी है तो बड़ी Like people महत्वपूर्ण say, है। this is something of thousands of इसलिए years अर्जुन old, के so it is सामने very important. अर्जुन के It has हृदय lot of में value. इसका महत्व So डालने के point लिए is ये that बोल रहे हैं। in order to convey to Arjun that आप whatever आजकल Bhagavan is speaking पुरानी is so important. चीजें खरीदते भी है ना, कोई पुरानी पुरानी Nowadays, many people buy the ancient relics, artifacts, आजकल ये लोग very लाखों में old. दे देते हैं। So for that they pay तो in ये योग millions. सबसे पुराना है So this yoga is the और oldest, बिना मूल्य के मिल रहा है, and you are इसको getting it हमें for free. दौड़ कर ले लेना चाहिए। So we should grab तो it किसी at का the घर है, earliest. किसी का कोई कपड़ा है, किसी का कुछ है, तो उसको कितना पैसा दे के खरीदते हैं, People pay so और much to उसका उनको buy कोई लाभ नहीं somebody's होता। ancient बस letter, दिखाने के लिए ancient अहंकार है कि हमारे पास है, very old clothes or नहीं तो something, आपके and they are not going to get any benefit out of that. It's just an ahankara नहीं that होता I है। have an ancient और artifact, सबसे something. पुरानी चीज है But this is कि most अब यह है कि important. जैसे हम It is the पुराने हैं oldest. भगवान पुराने, Like वैसे we ही are आप भी old, पुराने, जितने पुराने हम हैं Bhagavan, this उतना ही पुराना similarly ये this योग है। yoga. So this yoga is as ऐसी old as कोई भौतिक Bhagavan, चीज नहीं है जो इतनी पुरानी है। and there is no material object which can be so तो old. भगवान यहाँ कहता है कि मैंने इसको So here कहा, Bhagavan is saying that I ये योग spoke प्रोक्त है, this. पुरातन है, कि मैंने आपको कहा। तो क्या उन्होंने सब कुछ कह दिया है? अर्जुन को कह रहे हैं ना कि यही जो So पुरानी has चीजें मैंने he आपको कहा spoken everything to Arjun? Because he तो is उन्होंने telling that I विस्तार have में दिखा दिया है spoken. इसका, So point is वर्णन that दिया है अभी what तक के Bhagavan श्लोकों has में। spoken till now, that is the आगे बढ़ेंगे तो essence. और भी बहुत कुछ Although in the विस्तार में upcoming इसका chapters he will speak many things, but this और all he has already conveyed the जो essence, लुप्त हो गया था उसको प्रकट कर and रहे हैं। whatever was lost, और he is इसलिए revealing वो it कहते हैं कि again. ये रहस्य है, और रहस्य वही होता है जो He आप says किसी this को is नहीं बता rahasya, सकते। secret, and rahasya is that और which you do भगवान not ने want to इसको reveal to शिष्य को, everyone. गुरु That's को why in बताया Bhagavatam he said कि गुरु जो है अपने हृदय के रहस्य की बात that the अपने guru प्रिय शिष्य he को ही reveals सबको नहीं the बता
secret in his heart to ऐसे his छोटों से dear छोटा disciples only. It is not that he does not want to tell सबको to बताने का everyone, कोई लाभ नहीं है। but there is no use सबको of बताएंगे वो revealing the समझेंगे secret of नहीं his heart to और फिर उसका everyone दुरुपयोग because करेंगे, they will not understand that तो and they किसी will को rather बताना भी नहीं चाहिए। misuse that knowledge. That's इसकी why uh, विकृति हो everything should जाएगी। not be told to everyone. इसलिए मनु जी की Otherwise, एक और people वाक्य will है, destroy that. ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् That's नान्यायी why in Manusmriti it is also said. जानन्नपि भी मेधावी लोके जड़वल आचरेत, जड़वल लोके आचरेत। तो कहते हैं कि जब तक कोई पूछे ना तब तक बताओ ना, So he says that और अगर कोई as गलत long पूछ as रहा one है is not तो asking, न्याय don't से speak. पूछ रहा है। And if somebody is asking in the wrong way, then also don't speak. जानते हुए भी ऐसे बर्ताव करो जैसे आप मूर्ख हो, आप कुछ नहीं जानते। Knowingly also behave, even if you know the truth, लोक के still जड़वल behave like a आचरण। fool, as if I don't know anything. तो उसका कारण यही है, So the reason is this ऐसे only. श्लोकों को भी आजकल लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं। वो कहते हैं देखो ये ब्राह्मण People लोग ज्ञान को देना नहीं bring चाहते थे, wrong meanings out of these verses इसलिए also. उन्होंने They say शास्त्र that, में see, the Brahmins did शास्त्र में not use to like जो want to reveal the बम knowledge to बनाने की you. They टेक्नोलॉजी kept है it secret. उसको छुपा कर So रखते like हैं, nowadays you see this the ताकि technology for दूसरे making nuclear bombs, that technology is kept a secret. लग It जाए should तो वो not बम be नहीं leaked फटेगा। to the wrong people. If they get this technology, how much havoc they can create. So very limited number of people have that जो लोग technology. विदेश में हैं उनसे कितना डर रहता है। अभी भारत And those who पाकिस्तान have युद्ध that, 19 there is साल so हो much गए, fear. So India Pakistan war was there in और 3 days. The war was दोनों तरफ से ही खतरा there है was कि ये भी करेंगे ceasefire तो वो भी करेंगे। because the fear of nuclear war was तो there. ऐसे ये ज्ञान तो न्यूक्लियर पावर का भी बाप है। Similarly, so this knowledge is much superior even to न्यूक्लियर पावर nuclear तो power. भौतिक ही है, Nuclear power is still material इसलिए only. इसको छुपा कर इसलिए रखा जाता है कि लोग So इसको that's why this knowledge is kept a secret और कोई so that unqualified इसलिए people should इसको not रहस्य misuse कहते it. हैं। That's why it is designated तो as रहस्य it's को a प्राप्त secret, करने का तरीका rahasya. तो वही है So this what is the method of कि किस तरह getting से this secret knowledge? आप अपने हृदय से जुड़े हैं। जैसे That is परिवार में to जो connect the बात heart सबसे with the पहले guru. यही होता है, Like in family, कॉन्शियस कम्युनिकेशन। in relations, you should have conscious कॉन्शियस communication. कम्युनिकेशन आप तभी कर सकते हैं ना जब आपका Conscious हृदय खुला communication हो, is only possible when your heart is open. When the heart is जिसको open बोलते हैं from हार्ट both टू हार्ट sides, टॉक। that is called heart to ये तो heart तभी talk. संभव है ना जब आप That is दोनों only में possible श्रद्धा है, when विश्वास है। both have shraddha in each other, अगर मैं they आप have पर faith in विश्वास each नहीं other. करता, If I don't अगर trust भय है you, if I have कि आप मेरा fear from you कुछ that शोषण कर सकते हैं, मेरा you फायदा may उठा सकते हैं, exploit तो मैं me, अपने you आप may को छुपा कर misuse रखूंगा। me, then I will protect myself लेकिन from अगर you. मुझे कोई डर नहीं है But if I do not have any कि fear आप from you, मेरा कुछ नाजायज लाभ उठाएंगे, that you will take undue advantage of me, इसको बोलते हैं then I ट्रस्ट will speak from my कम्युनिकेशन। heart. That is called revealing in confidence. इसलिए आपस में जब प्रेम होता है तो दो So लोग when there is love अपने among हृदय की बात को प्रकट करते हैं। two people, then they तो वही बात express यहाँ पर their भगवान कह hearts रहे to हैं each other. तयोसी में So that's what संस्कृत Bhagavan is saying here. रहस्यम ही एतद उत्तम, कि आप मेरे भक्त हो, Bhagavan मेरे is मित्र telling that समान you हो, are my bhakta and you are my friend. इसलिए मैं आपको ये उत्तम That's रहस्य why दे I रहा am हूँ। speaking this supreme secret to you. तो सखा उसी को बोलते हैं, सखा मतलब निर्निमित्त हितकारी, So Sakha जो means दूसरे का who is कल्याण a चाहता है well बिना wisher निमित्त के, बिना किसी without कारण के, any reason, बिना किसी बदले की प्रतिक्रिया की भावना without से वो expecting anything काम in करता है, return, उसको expecting सखा anything बोलते in हैं। any benefit in इसलिए return. आजकल That is तो called Sakha. डेफिनेशन समाप्त हो गई है, लोग फेसबुक Nowadays, फ्रेंड होते हैं, there is no real Sakha also. डेफिनेशन People का are अर्थ ही खत्म हो mostly गया। Facebook friends. So the word friend has सखा lost का its मतलब यही है कि original meaning only. खालती खादती थी सखा, साथ में मिल बैठकर So Sakha means खाएं, who sit together, हृदय eat, से play, reveal their hearts. They मिलें, are one in इसको heart. सखा बोलते हैं। That is called भक्त Sakha. का मतलब जो उनके प्रति एकदम श्रद्धा का भाव रखता है, श्रद्धा नहीं And होगी तो Bhakta means one who has a very, उनके प्रति who एकदम keeps a लगन very, है, a feeling of great निष्ठा है, Shraddha, whose heart is filled with love. That is भगवान called के प्रति Bhakta, प्रेम है, having love for उसको पूरा Bhagavan. विश्वास है कि
यही having मेरे सब faith कुछ on है। Bhagavan that he is all in all तो for भगवान इस me. बात को जानते हैं So Bhagavan knows this, और इसलिए उसको ये बात याद दिला रहे हैं। and so तो Bhagavan इसलिए is reminding Arjun that इसलिए because you भगवान are ने my कहा था bhakta, you are my friend, I am speaking this. So what was the need ये तो to speak सभी this? जानते हैं कि अर्जुन मेरा सखा Everyone है, knows that Arjun is Bhagavan's friend. उनका इतना गाढ़ सखा है कि जब In भगवान fact, ने कहा Arjun कि was such a close friend एक अक्षौणी that नारायणी when सेना है Bhagavan said that on one side I have my Narayani's army and on one आप side I am there लीजिए without any किसको चुने, weapons, so whom do you want to भगवान ने मेरे को choose? आप चाहिए। So Arjun chose Bhagavan. तो ये तो युद्ध का समय था, उनके पास में कौरवों से सेना बहुत कम थी, So the war was impending तो and उन्होंने सेना ले सकते थे, Pandavas had very less or limited army तो उन्होंने सेना लेने से मना कर दिया, compared to इसलिए Kauravas. तो भगवान ने But कृष्ण को Arjun चुना। refused to take the army. Arjun chose Bhagavan. कोई परवाह नहीं है, So आप Bhagavan हैं said तो that, but सब I कुछ will है, not fight. आप नहीं है तो So, but सब Arjun कुछ नहीं said है, not to worry. सेना If देंगे। you are there, everything is there. And if you are not तो there, ये इनका even if I have a whole army, it is जन्म useless. न जन्म न So संशय this is पुनरुत्थान symptomatic of Arjuna's bhakti. पुनः जन्मनि जन्मनीश्वरे, Like Sri Chaitanya Mahaprabhu said कि केवल हमको आप that ही चाहिए और कुछ I नहीं, just want you, चाहिए तो nothing केवल आप else. ही चाहिए। Bhakti means I want you only. तो इसलिए ये तो सभी जानते ही हैं, तो यहाँ So भगवान सबको everyone याद already दिला रहे हैं knows about this. So why is Bhagavan अगर आप मेरे मित्र speaking हैं about this? That you are तो my मैं friend, you are my आपको बता दूं devotee. कि आप मेरे मित्र हैं, If you are my friend, why do I मेरे need to भाई हैं, speak that you are my friend? आप मेरे भाई हैं, If you are my brother, do आप I मेरे need to पति say हैं, that you are my brother? क्या आप मेरे If पति you are हैं, somebody's husband, does the wife अगर need आप to मेरी say वाइफ हैं तो that सब you are कुछ my है। husband? What is new about that? Everyone knows. तो ये कहने का मतलब ये है कि So the अपने point हृदय is को खोल रहे that हैं वो, Bhagavan यही is हमें opening शिक्षा यहाँ दी जा रही है Bhagavan is opening his own इसलिए heart कि हम जब and he आपस is में teaching that वार्तालाप करते when हैं we discuss तो किस or तरह do से any सभी conversation के मन among में each other, how ये एक श्रद्धा का भाव पैदा करें। we generate the shraddha in the other person's ये heart. कॉन्शियस कम्युनिकेशन का फार्मूला है, So Bhagavan is giving the formula तो of भगवान ये कह रहे conscious हैं, ये communication. इसलिए कह रहे हैं कि What इसको Bhagavan is सुनकर speaking here, कि अच्छा ये that मेरे when Arjun hears this, सखा हैं, मित्र हैं he will और ये जो feel कह रहे that हैं the ये मेरे person भले की कहेंगे, क्योंकि who is श्रद्धा का अर्थ speaking भी will है speak भले for की, my welfare only because he नुकसान ना recognizes हो, me as his devotee, his friend. नुकसान हो आपका Because नहीं हो, friend will not cause harm to ऐसे you. तो वो तो सखा हो ही नहीं सकता, वो तो That विरोधी है। cannot be a friend, that is enemy. और भक्त के प्रति भगवान भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि उनका Even दुश्मन Bhagavan है, will not भगवान तो कहते हैं कि भक्त से speak मेरा like कोई this about है ही Bhakta. नहीं। तो ये कहने का Bhagavan उद्देश्य says यही है that nobody is कि dearer to भगवान me मेरे than my हृदय को devotee. खोल रहे हैं। So the point that हालांकि Bhagavan is कभी making कभी is that भगवान इतनी हमेशा Bhagavan नहीं is लेकिन opening Arjuna's कभी कभी heart. भगवान Although के Arjuna's द्वारा heart is opening only, वार्तालाप but होता है, Bhagavan is इस teaching स्तर पर us होता है। that dialogue और जब conversation happens इस at this प्रकार का level. स्तर होगा And when this will be the level, the तो platform of भक्ति की dialogue, धारा जो है then वो the प्रवाहित flow होगी। of knowledge will take तो जो place. भी भगवान बोलेंगे वो उनके हृदय में सीधा प्रवेश Then करेगा। whatever Bhagavan will speak, तो it will directly enter Arjuna's heart, प्रकाशनते ही महात्मना, as it is said in the Upanishad कथिता that ही Prakashante तो Mahatmana. कथित अर्थ जो है वो उसके हृदय में सीधा प्रवेश So करेगा। whatever is being तो spoken, ये its artha आत्मबोध will जो directly enter होता Arjuna's है, heart. Now Arjuna is यदि ready हमारे अंदर इस to प्रकार की श्रद्धा नहीं है accept that knowledge. Until and तो unless जब we कोई have this व्यक्ति कुछ Shraddha, बोलता है तो then what हमारी happens when somebody speaks? बुद्धि पीछे Then से our mind, सोचती our रहती है, उस buddhi, पर विचार करती रहती है, क्या then वास्तव में ऐसा है, ठीक starts बोल रहा है कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, applying इसको कैसे discrimination on करें। that. Is this correct? It is wrong. तो What is जब correct? तक What is ये wrong? स्थिति It रहेगी will always तो bring this हमारा logic. ज्ञान होता So नहीं as है। long as this stage will be there, we will not और receive जब the हमारा हृदय जो knowledge. है इस स्तर पर खुल जाता है And when our heart will open at this तो level, फिर ज्ञान का प्रवाह चलता है। then the flow of knowledge will take तो place. इसी के लिए भगवान So यहाँ for पर this reason only, here इस शब्द को बोलते हैं Bhagavan is कि वो speaking पात्र को तैयार कर रहे these हैं। words, meaning that he is making Arjuna ready अगर किसी के to पास में कोई receive this पात्र है, knowledge. If you have a उसमें पहले vessel, से ही कुछ भरा हुआ
and it is already filled with something, तो फिर क्या होगा जब आप उसको कुछ देंगे तो वो पात्र then भर whatever जाएगा we will fill inside that, it will overflow. और It will not परिणाम enter भी यही inside. होता है। And this is what usually सुनते तो happens. बहुत हैं We hear a lot, लेकिन ग्रहण कितना करते हैं। but how much are we able to imbibe? आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा Today in सबसे this world, फ्री what is चीज available की in जानकारी है maximum वो ज्ञान quantity है। and for free, that is ज्ञान knowledge. आज The संसार में amount of knowledge that is ऐसा available in the कभी world today, इस जगत के इतिहास में नहीं हुआ कि ज्ञान जो it है was इतना never उपलब्ध हो available गया to such an maximum and free, maximum extent and free जितना in your own ज्ञान की home. प्रगति जितना ज्ञान का But अनादर but और how जितना much ज्ञान का knowledge is being misused and disrespected and आज के rejected दिन है in ऐसा कभी today's नहीं हुआ। time, that also never happened earlier. पहले कोई व्यक्ति छोटी सी चीज समझता था Earlier, तो a उसको person ग्रहण used to hear something very small, also, he करके used to ग्रहण hold करके on to it. वहां पर गए In childhood, we used to हमने hear ये बात सुनी that somebody हमने said, ये बात I सुनी went here or I went there, and उसको there I ग्रहण learned करके this from this person. आज And ऐसा then they लगता है hold कि on हर to कोई it. जानता है Today, everyone knows about so many और हर कोई things, जानता है मतलब उसका कोई महत्व नहीं है उसकी meaning वैल्यू now नहीं it है has no value only. तो इसलिए उस पर कोई अमल नहीं करता है उसका अपने So, जीवन में नहीं लाता nobody क्योंकि अपने जीवन में हम उसको applies it in his own क्योंकि life हम सोचते हैं कि ये because मेरे लिए we अच्छा है imbibe that ये only मेरे लिए what we लाभदायक है consider मैं important, इसका उपयोग beneficial कैसे for करके us. If लाभ we think प्राप्त that करूं if we इस use जीवन में it, if we apply it, it will be helpful for us. ये स्थिति है तो यहाँ ये जो So this बात is the बताई गई कि ये condition. रहस्य है तुम So इसको here, पाओ ये what प्राप्त करो Bhagavan is saying that ये this is the सब secret. सारे You are सिद्धांत my का प्रयोग जो भगवान devotee, ने you are किया my है friend. अर्जुन को Whatever words पात्र Bhagavan is using, that is to समानाधिष्ठित make Arjun the patra, the qualified कि इसको candidate श्रवण to करने से receive this इसको knowledge, महत्व दे so that he hears this और and इसके ऊपर gives विचार करे importance to this knowledge. इसको आप समझने के लिए प्रश्न कर सकते हैं लेकिन In order to समझने के understand the अलावा subject, you can ask उससे सहमत questions, नहीं होना but not to disagree, आपका कुछ और मत है and that ऐसा you have नहीं है कि another, you have a difference नहीं of होगा opinion. कभी Then what will समझने के happen? बाद हमेशा You will simply keep लाभ arguing. प्राप्त के करने की है लेकिन यहाँ तो भगवान सब रेडीमेड There दे also रहे हैं may be that you want to receive knowledge, but here Bhagavan is directly giving इसलिए everything ये ready-made. श्लोक देखने में साधारण लगता है So this verse ये appears पिछला to वाला be श्लोक भी ordinary, and even the लेकिन previous बहुत one, महत्वपूर्ण but है it is क्योंकि extremely important ये हमको समझाता है कि किस because तरह से it teaches us how हमें वार्तालाप we should करना communicate चाहिए और हमारे संबंध कैसे ठीक हो सकते हैं ये and how we can प्रैक्टिकल have good नॉलेज है relations. हमारे अपने परिवार में भी This is a very practical हमारी इस knowledge. प्रकार की ट्यूनिंग नहीं होगी Until and unless we have हमारे such संबंध ठीक level नहीं of होंगे tuning up with our family members, we will not हर have good आदमी relations. सिकुड़ के रहता है Then every जो भी person बात करता है तो will वो बहुत uh, कैलकुलेट करके बोलता है कि इसको मैं ये बोलूं stay limited, and he will इसको not मैं ये open his बोलूं heart, and he will think है that if I speak this, what will happen? If I speak that, what will happen? There will be a sense of तो fear, यहाँ इस परिस्थिति में insecurity. But here it is not like व्यवहार आप that. बाहर के लोगों से करिए लेकिन आप हमारे जीवन में With कम से कम एक people in व्यक्ति the ऐसा outside होना world, you चाहिए can maybe behave with that जिससे like that, आप but लोगों at को least there should be one person in our life with कोई भी whom we प्रकार की can talk आध्यात्मिक in a very, very मेरे open जीवन way. में तो ऐसा होना ही चाहिए And with Guru, you should नहीं be तो completely गुरु से open. ज्ञान का लाभ नहीं होगा Otherwise, you will आपको not गुरु से ज्ञान का लाभ benefit प्राप्त by करना है receive the तो benefit of सबसे पहले knowledge from the भगवान Guru. को So हमारे if we जीवन have में to स्वीकार receive the करना knowledge from the Guru, भगवान we should have this type of बता रहे हैं feeling तो फिर what योग्य गुरु से Bhagavan is आप speaking ज्ञान here. प्राप्त कर सकते Then हैं you will be able to इसलिए receive knowledge from the qualified Guru. क्योंकि योग्य गुरु वही होगा जो भगवान का प्रतिनिधि है Because qualified Guru will be जिसको that only who is representative of Bhagavan आगे बढ़ा रहेगा and और who can उसका take और this कोई उद्देश्य knowledge नहीं है क्योंकि वो forward, भगवान का who प्रतिनिधि has है no other तो जिस प्रकार से purpose. He भगवान is a representative of बिना Bhagavan. किसी प्रयोजन के बिना किसी कोई लाभ प्राप्ति के लिए इस संसार में आते हैं So Bhagavan appears in उसी this world प्रकार से without गुरु any भी selfish interest, without ऐसा ही anything to obtain for समाधान करने himself. के लिए So सूर्य Guru is also like that. सूर्य जैसे प्रकाश देता है So as Bhagavan gave the example प्रकाश of के बिना वो Vivaswan, कुछ नहीं प्राप्त Surya, करना चाहता the है sun निमित्त sun gives light without any तो गुरु भी ऐसा
expecting any benefit in return. So the qualified guru is also like this only. Guru does not want anything, any benefit in return. If Guru desires any benefit in return, then the parampara becomes deviated. This is how paramparas become deviated when the Guru is not qualified and Shishya, the disciple, cannot obtain knowledge from the Guru. Or if the Guru is qualified but disciple is not qualified, there is a possibility the disciple can become qualified by the mercy of the Guru, and then he can get the knowledge. Otherwise, what happens is we hear from the Guru, the words are of the Guru, but the meaning what we apply is our own. So this is the deviation in the parampara. Then the parampara becomes lost. So the word should be also of the Guru and the meanings should also be according to the Guru. Then the parampara continues. But the words are of the Guru and the meaning is according to myself. So this is what often happens. People ask questions. They are not asking because they want the answer. They are asking in order so that they can get a validation from me of the concept that they already like, or they will come with a problem and they also bring a solution to the problem, and they just want that solution to be rubber stamped by the Guru. Whatever, whoever Guru is, they should get their idea validated and rubber stamped by the Guru. So actually Guru has not told that, but they want it to be validated by the Guru. So then there what happens, the words are of the Guru, the words are of the disciple and the meaning is also of the disciple. So there are three levels. One is the words are of the Guru, meaning is of the Guru. Other is where words are of the Guru, meaning is of the disciple. And the third one is the words are of the disciple and the meaning is also of the disciple. And the third one is what I see mostly. So whatever somebody wants to do, so for that they will find out some verse for that. Because our shastras are like Kalpataru, wish fulfilling tree, they can fulfill all your desires. So whatever you want to do, accordingly you find some verse. So you see what you see all around, that whatever ideas are fitting according to one's agenda, so then they find and show verses according to their agenda. But if you ask them from where did you learn this, then they will have no answer. So this is the problem in today's society. People do not study. Study means going to Guru and getting the knowledge from the Guru according to the system prescribed in Shastra. So what Manu is telling, Anyayana Prichata, meaning the person also is not studying to learn. He's doing that just to give a rubber stamp on his knowledge that I heard from him. He also speaks like what I think. So this is how the parampara becomes deviated. So today's situation in our society is like this only. And especially in the sampradaya of Sri Chaitanya Mahaprabhu, it is to a immense extent, altogether different level only. You see that so many opinions and systems and traditions are there, and every person he says that I am right. So we will stop here for today, and if you have any question you can ask. पवन जी पूछते हैं कि Question: गीता के लिए कोई व्याकरण की पुस्तक का सुझाव दे सकते हैं आप? Can you suggest some grammar books for Gita?
Question: what do you mean by Gita Vyakaran? Gita Press has a book on Gita Vyakaran. But if you want to learn Vyakaran, you have to learn Vyakaran. What has Gita got to do in that? If you just want to learn the derivation of meanings, words of Gita, then Gita Press had a book on that. I don't know if it is still being published or no. इस कौन सा ही छपी है या कहाँ से? रास बिहारी लाल पर मिलती है एक इंग्लिश में. Ras Bihari Lal, you can contact. You will get some book on Gita Vyakaran. पर उससे तो तभी आपको तभी लाभ होगा जब आप व्याकरण जानते. But that will be beneficial only if you know Vyakaran. If you don't know Vyakaran, then that book is of no use to you. आपने बताया कि Question: जब तक कोई ना पूछे you said ना बताओ. that as until लेकिन स्वामी जी, if कोई somebody बात does not करता ask, है, then don't answer. मेरी भी But ऐसी आदत है if कि somebody is making a mistake, तो like I also have this habit, I करना है. tell good things to somebody if I see is making mistake. So answer: कोई उत्तरदायित्व नहीं है. if you do not have any responsibility आवश्यकता नहीं है बताना. to correct that person or instruct him, then there is no need. के लोग हैं तो But if is your family member, then you have a responsibility. कुछ कर रहा But if you go outside, everyone is doing something. If you keep instructing others, then there will be fighting. ज्ञान की बात चल रही है. But here the topic is of knowledge. कुछ काम गलत काम कर If somebody is standing on the road and doing something wrong, you can tell that person not to behave like that. Bhagwan is not talking about all that. He is talking about the parampara of knowledge. पर वैसे आजकल तो किसी को कुछ भी कहना. But as such, nowadays, it is extremely risky to tell anything to anyone. नेक से रहा 100 गुना. हाँ, अगर वो मानता है तो. लेकिन अगर नहीं मानता है तो आपके साथ अकड़ भी तो सकता है ना. So if the person agrees to what you say is okay, otherwise they can fight also with you. Nowadays fighting happens. If you tell something to anybody, then आपने स्वामी there will जी be fighting. पहले राजा बहुत अच्छे होते थे. Question: you said that earlier kings were great kings. आईएएस और आईपीएस चलाते हैं स्वामी जी. And nowadays the country is being governed by IAS and IPS इसीलिए जिससे देश officers. नहीं, ये इनके ऊपर भी तो कुछ रहता है ना. आईएएस ऑफिस No, and sir, there are people above these IAS, का है. IPS people also. There is the judiciary system. They can control if they want. राष्ट्र का प्रधानमंत्री है The prime minister is there. तो और ये मुख्यमंत्री हैं तो वो भी तो The chief ministers of states are there. They are. आईएएस ऑफिसर ही सब कुछ कर सकता है. वो करते It हैं. is not that IAS, IPS officer will do everything. The connection is there. That's why they take the decisions. Because the ministers also want that these officers should work accordingly like this. So it's a whole nexus. इसलिए कोई ठीक काम करना चाहता है तो उसको कोई टिकने नहीं देता. That's why if anybody wants to work properly, he'll not be able to continue. ये है कि Today's situation is that उत्कोच लेते हैं. उत्कोच जानते हैं ना, संस्कृत में उत्कोच कहते हैं ब्राइब को. so nowadays there is so much of bribery. और अगर कोई एक अफसर ऐसा है जो उत्कोच नहीं, If there is an officer who does not take bribe, then others do not like that officer, that he is creating problem. It is better if he gets transferred. So this is the situation today. इसलिए चिदम्बरम ने एक बार कहा था ना कि भ्रष्टाचार को भी कानून बना देना चाहिए. That's why Chidambaram had told once that even corruption should become a law, that at least money will convert from black to white. सृष्टि जी का प्रश्न है, जब हमारी आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं तो वृंदावन Question: की दिव्यता को अनुभव when our eyes are full of shraddha, then we can experience the land of Vrindavan. So is this experience limited to Vrindavan Dham only? Answer: no. If you have shraddha, you will see Vrindavan everywhere. YouTube से एक प्रश्न है, मन Next बुद्धि question. इंद्रियां भौतिक हैं, आध्यात्मिक
If mind, intelligence and senses are material, क्या करते हैं? क्या एक व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को इस भौतिक शरीर में अनुभव कर सकता है? can a person experience the spiritual energy in this body itself? So that's why Bhagavan said that if we cannot experience, how to experience then? Since our instrument is all material, and here we are trying to get the spiritual knowledge, so if we cannot experience it by our mind, intelligence, senses, then what is the use of teaching this? And what is the use of Bhagavan appearing here? When Bhagavan came here and people saw him, they saw him with these material eyes only. It is not that they got some different set of eyes. सौम्या जी का प्रश्न है, Next question. Nowadays, all information, all rahasya available about Vedic scriptures, which can be used unwisely with evil intentions. So, what precautions should we take so that we can live in this world peacefully? बता सकते हो एक रहस्य जो उपलब्ध है आपको? आपने कहा सभी रहस्य उपलब्ध हैं। You told that all secrets are available. So, my question to you is, can you tell me one secret which is available to you? क्योंकि आपके पास भी सभी उपलब्ध होंगे। Because if they are available, then they should all be available to you only. बताएंगे? चल रहस्य में चलेगी। चलो कोई बात। प्रणाम बाबा जी। बोलिए। हाँ, प्रणाम बाबा जी। एक्चुअली रहस्य मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी रिचुअल्स है बहुत सारे लोगों को पता है और So by rahasya, what I mean is that all the rituals, etc., which are available. So I am asking you, tell me one which is available. जैसे कि आप केवल लेफ्ट हैंड तंत्र, जैसे कि लेफ्ट हैंड तंत्र। हाँ तो उसमें बताइए ना क्या पता है आपको? लेफ्ट हैंड तंत्र में आप क्या जानते हैं? So you tell me, what do you know in left hand tantra? Which rahasya do you know? मैं नहीं जानती हूँ, बट नहीं तो अभी आपने कहा ना कि सब But you said that it is all available. I am not adding from my side. You said that today all the rahasyas are available. This is what you said. So if they are available, they should be available to you also. That's why you said. So I asked you, tell me one rahasya. So you said left tantra. So I told you tell me one rahasya from that left tantra, because that is just a name. What is the rahasya in that? नहीं, मुझे पता नहीं है, बट जैसे आपको पता नहीं है ऐसे भी किसी को भी पता So नहीं। just like you don't know, similarly nobody knows. आप केवल एक गलत धारणा बनाए हुए बैठे। You are simply having a wrong assumption, wrong idea that everybody knows. Nobody knows. Is there somebody more intelligent than you? कौन है? बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, आप हो। So this is your wrong understanding. पता नहीं है तो मेरे को नहीं पता है, आपको कैसे पता कि मेरे को पता है? नहीं नहीं, नहीं, मैं ऑल इंफॉर्मेशन एंड ऑल रहस्य मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को चाहिए वो इंफॉर्मेशन तो So वो what I mean is that when I say all are available, what I mean is that people can take out all the rahasya, whatever they want. So I am saying that no, they cannot get the rahasya. जिसके पास में रहस्य होगा वो This is your wrong understanding. One who knows rahasya, he does not upload it on the computer. जिसके पास में रहस्य है उसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन है जिसके किसके पास में रहस्य है। अच्छा, One who has rahasya does not leak it on the computer. And those who are putting on the computer, either they are not putting the rahasya, they only tell that much what people can understand, or maybe they don't have only. अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया और आई एम फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड बाबा जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि जैसे भगवान ने अंत में जाके कहा ना गीता में,
As Bhagavan says at the end of Bhagavad-Gita, न कदाचन ना शुश्रूषये वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, कि अब ये ज्ञान जो है ऐसे व्यक्ति को इदम ने ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषये वाच्यम न च माम सो अभ्यसूयति। भगवान कहते हैं ज्ञान ऐसे व्यक्ति को मत देना जो तपस्वी नहीं है। so Bhagavan says that don't give this knowledge to one who is not tapasvi, one who is not bhakta, who does not want to do seva, ईर्ष्या and करता है। one who is envious of अब कोई me. कह सकता है कि ये ज्ञान तो उपलब्ध है पुस्तक So में, now you may say this book is available, knowledge is available. पढ़ सकता है, The one who is not a bhakta, he can also read. Yeah, he will read what he will understand. Bhaktas only not are only not able to understand Gita. What will an तपस्वी नहीं है abhakta or a non-devotee understand? One who is मांगे कि इसमें से not austere, what will he understand? पैसे कमा Yeah, लें। he may take something out from this and earn ये money, रहस्य है, but इसका the rahasya, the secret of Gita, ये रहस्य शब्द का दो बार ही what उपयोग किया Bhagavan है, is एक using बार the word यहाँ पे rahasya, और एक बार he has भगवत used it गीता में। twice. He uses here and at the end also he uses it. सर्व गुह्यतमम भूय, गुह्य शब्द का मतलब वही रहस्य, So Guhya also means rahasya only. और उसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ने से So आपको you कुछ can नहीं read समझ it. आने वाला, वही तो By शब्द reading, है, you वही don't शब्द understand. है, That's what I'm saying. लेकिन शब्द के पीछे These अर्थ are the क्या है, words, but what is the earth, the meaning behind the words? That only a rare person knows. मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान गीता में कहते हैं बहुत लोग In हैं Gita, Bhagavan says that there are so many मार्ग के बारे में सोचते people, ही नहीं है, they don't उनमें even से कुछ think लोग about हैं जो this इस path. मार्ग पर आते Out हैं, of ऐसे them, बहुत लोग some very few जो people सिद्धि come on प्राप्त this करते हैं path, वो भी मेरे को नहीं जानते, and out of that, वो many भी आज people भी who get नहीं siddhi, they जानते also don't know me. भगवान कृष्ण क्या है। How वो many केवल people in कृष्ण this को world know what जानते हैं, Krishna actually is? Even Krishna's bhaktas don't know what कहने से नहीं Krishna है, is. कहने लगे हैं कि वो स्वयं Just भगवान not है, वही not है, just a सब matter of कहने की बात speaking. नहीं है। You can say that he is कितने लोगों Swayam ने Bhagavan वास्तव and में this. अनुभव किया है इस It's ज्ञान not just a matter of words. How many people have actually को, कहते हैं realized that or experienced that? एक दो ऐसे होते So Bhagavan says maybe one or two, maybe हैं। like इसका that. कोई भंडारा नहीं है, सिर्फ So फ्री it is not a फीस्ट, free bhandara getting feast. ये सेल्फ प्रोटेक्टेड नॉलेज है। This knowledge is self-protected. क्योंकि इसकी प्रक्रिया ही ऐसी है जो मैंने बताई थी, यहाँ तो समझने का प्रयास करो तब समझ नहीं आती है, So its system is like this. Even after trying to understand, it is so difficult to समझने understand. की प्रयास So करो, ordinary person, what will बड़े understand? टेलीविजन लगा के फिर आप सुन रहे हैं तो आपको Taking कैसे dinner, प्राप्त होगा, sitting in front of television, इसके hearing. लिए मेहनत This is करनी not the पड़ेगी, way to तपस्या get करनी knowledge. पड़ेगी, You have to work hard for that. Do tapasya. जीवन लगाना पड़ता है अपना। You have to invest your whole life into this. Then you get the knowledge. है कि ये प्रश्न ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी पूछता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये रहस्य केवल भक्त और उनका सखाओं के लिए है, लेकिन फिर भी The question भगवान Bhagavan says that this rahasya is for his for his bhaktas, एक भगवान for his sakhas, but still Bhagavan is known as Jagat Bandhu, वास्तव में the friend of the whole world. सारे जीवा इनका वो कहते हैं कि मैं जगत बंधु हूँ, विश्व में हाँ वो कहते हैं, लेकिन आप तो नहीं कहते हो ना, So Bhagavan is telling he is Jagat मैं Bandhu, but आपको you are कहूँ कि not आप मेरे telling मित्र this, हो, na? आप I कहेंगे tell you आप you मेरे are my मित्र friend, हैं, but you don't say तो like आपको that. तो लाभ नहीं होगा ना, ये तो Then कहते how हैं will you benefit? It is what I am saying. भगवान कहते हैं, Bhagavan is telling. सर्वश्रुचाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपहनम च सुहृदम सर्वभूतानां हृदय से, वो कहते हैं मैं तो सबका सुहृद हूँ, लेकिन जीव तो नहीं Bhagavan मानता says है, that I am everyone's well-wisher, but the आप Jiva मान is लीजिए, not accepting it. If you accept it, बंधन हो गया आपके लिए, then your life is perfect. लेकिन हम तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं, But we are not ready to accept that. समस्या हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से Problem कोई is from समस्या our नहीं, side. From his side, there is no problem. ठीक है। प्रश्न है आप बता रहे Next हैं कि question. गुरु और शिष्य के हृदय You were talking about about एकता करने के लिए, one-heartedness with Guru. तो क्या आपके Do you पास कोई have any प्राइवेट विधि practical है जिससे हम tips अपना how हृदय to गुरु make और our भगवान heart as शिष्य बना clean सके? as मेरे Guru? पास कोई प्राइवेट विधि नहीं, I don't have any private secrets सम्मानित methods for प्रधानमंत्री जी this. का प्रश्न है, यदि Next मैंने सही question. समझा है तो If I भगवान understood भगवत गीता में correctly, the शाश्वत secret ज्ञान, of not losing शाश्वत sight ज्ञान of the के eternal रहस्य knowledge में Sri Krishna कि हमें spoke अपने about गुरु के हृदय is को to समझने have के लिए oneness in heart अपने with Sri शरीर Guru. में कोई
गुरु If के so, हृदय के how संबंध does में one मैंने develop आपसे this सुना था। oneness of heart? इस समय वाणी Alaukik में Shraddha अलौकिक in श्रद्धा Shri की Guru प्रेरणा मेरे लिए seems beyond me at this time. फिर नहीं हो सकती है, No, if you feel like that कोई असंभव लग रहा है it तो is कैसे beyond संभव है? you, it is impossible, then how it can be possible? It is not possible then. आप ही कह रहे हैं कि असंभव लग You are रहा है only तो telling it कैसे is संभव है? impossible. Then how it is possible? It is possible. Sorry, it is not possible then. धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Dandavat Pranam. Thank you for a wonderful class. You made it very evident what it really means to be in parampara, this joining of the heart between student and teacher. And I'm so grateful for this. But a question arises, and often when you're speaking to people, because they've experienced something that hasn't been in synthesis with what you're saying. And so now they've been through so much, and then they say, well, is it possible for me just to be united at heart? Do I have to undergo ceremonies like Diksha, or even people are coming up with concepts today of, this Ritvik Vad of just taking Diksha from sound as non-existence, just as a safety net, because we don't know what the caliber of the Guru is today. Can you kindly just comment on this, please, especially within our Gaudiya Sampradaya? No, I already commented on it. I said that now what people want is that I have everything available, all the books are available, and lectures are available of different teachers, different acharyas, even those who are not physically present. So I can listen all the knowledge from different places, and I can design my own sadhana, and I can do it. And as far as thinking, yeah, I can accept also little diksha about a guru who is not even present. Like other day somebody sent me video how somebody was giving sannyas on internet, on Zoom. So all this is possible. So this is exactly what I said, that the words are of the guru and meaning is of the disciple. So that is what is prevalent now. Whether we call it Ritvik Vad or Diksha Vad, doesn't matter. That's what is happening. Because this system is different, what Krishna is describing. He used this word bhaktosi me sakha cheti rahasyam hi etad uttamam. So these words are very important, that this rahasya I am revealing. Similar statement is in the very first chapter of Bhagavatam. Bruyu shnigdhasya sishyasya guruvo guhyam apiyuta. That gurus will disclose guhya. Guhya is another word for rahasya. To whom? It's Shishya who is Snigdha. Snigdha is, you can say, same as Bhakta and Sakha. So unless that happens, this secret knowledge does not get transferred. But because anyone who comes on the spiritual path, he cannot say that, well, I'm not following the right path or I don't have the right understanding. That your ahankara will not allow you to think like that. So then you will make your own understanding. You will concoct your own understanding out of Shastra, out of the words of the Guru, and then say, look, this is what is said, and you will put it together logically. So our mind, our intelligence, they are good at that. And that's what you see. I mean, recently I watched some of the videos. One part is saying that Diksha is important, other is saying Diksha with the living Guru is important, other is saying that no, it is so and so is the last Guru, and that's all. So both have their explanation and arguments, and they both believe in it. And now it depends on the new person who gets influenced by which one, and that influence will come because of one's own sanskaras. So that's what is happening. So this is what Krishna is doing is different. What is happening is different.
पुरुषोत्तम जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। हिंदी में कहिए प्लीज। हिंदी में क्या कहना? आपने अभी जो कहा सब सारांश वो जरा बता दीजिए तो लोग सुन सारांश पाएंगे। यही है, सीधी बात यह है कि So the essence is that human being मन से चलता है। works by एक his, होता है, lives by his गीता में कहते own हैं whims and fancies, his mind. तो एक है मनमना और एक है मनमानी। So Bhagavan is telling man mana, हिंदी में दो and शब्द है। मनमना there का is मतलब another thing called man mani. मन Man mani means by our independent ideas, whimsical whims and fancies. मन की बात सुनो। Just listen to own mind. That is what तो we वही have made समझा it. रहा था कि So that's what I was explaining, that the words are of Guru. तुम इसका अर्थ Guru has समझो, said like गीता का this, अर्थ but the समझो के अनुसार disciple applies meaning according to उसके अनुसार वो what is शास्त्र को comfortable to लेगा। him. Accordingly, he और फिर derives the meaning, उसके लिए वो शास्त्र की भी सहायता लेगा and then for that और he दूसरे takes help from आचार्यों के Shastra also के लेख हैं, and उनकी other पुस्तकें हैं, तो acharyas, कहेगा नहीं देखो यहाँ भी ऐसा कहा है, या किसी की जीवनी उठा के लाएगा कृष्ण के or he will ब्रज take के out somebody's चरित्र को life निकाल के लाएगा, from some बहुत book भक्तों like की Vraj कहानी Ke Bhakta, and then he will show stories तो वो from lives of previous saints. तो इस प्रकार से चलता रहता है। So all these things go उन on. उन भक्तों की जो कहानी जिसने लिखी है, क्या उसने वास्तव में ठीक से अनुसंधान Now, करके those who have written those stories, have they researched it properly, क्या वो or शास्त्र से whatever they लिखा गया heard, है, they just wrote या वो that? भक्तजनों Is ने it वास्तव में उसका according to ठीक Shastra? से वहाँ लिखा गया है? Was that devotee actually तो इस प्रकार की according to what is written? वो Was he उदाहरण like this? ढूंढेंगे अपने अपनी बात को मनवाने So, के like लिए। this, they will दूसरों को find मनवाना है तो many पहले तो अपने को examples कन्विंस करने के लिए कि to मैं ठीक हूँ, prove their idea. क्योंकि हर एक First of all, they will उसको पता convince है themselves what they think is right, because every person, whatever he does according to his mind, is right only. According to him, it is right only. Even if it is wrong, तो जो he will find out some जिसके logic पास तर्क होता to है, वो prove that शराब it is पीता है, right. मद पीता है, इवन के कोई किसी के साथ में बलात्कार करता है तो उसका भी तर्क होता Even है if somebody कि मैं क्यों is कर रहा हूँ, doing theft लेकिन वो or कम से कम even rape, then for he will अपने को just समझाता है justify that also, because at least he has to convince his own mind. जिसको वो एक दोष भावना गिल्ट फील होता Otherwise, है, he will continue suffering from guilt, तो वो कोई पसंद नहीं करता है। and nobody likes to live in इसलिए guilt. जो भी कोई आदमी कुछ काम करता है वो ठीक ही That's करता है why अपने मन से, every person, लेकिन यहाँ whatever उसके he मन से does, ठीक करने की बात नहीं है, या भगवान के मन से ठीक या नहीं है वो चीज है। is correct only according to क्या him. कहते But हैं here, that is शास्त्र, not important. Here, शास्त्र क्या important कहते हैं, is it right or wrong according to Bhagavan? What does Bhagavan want? What is Bhagavan's शास्त्र कहता है opinion? कि मैं मतम, ये मेरा मत है, Like he तो says, उनका मत this क्या is है my opinion. So the ये हमको जानना important है, point is उसके what is अनुसार his हमको अपना opinion. जीवन ढालना है, तभी हम हमको उनका भक्त कह सकते हैं, नहीं तो Then only we can say we are his हम तो devotee. अपने मन से रहें कहते हैं हम भगवान की भक्ति हैं, Otherwise, how can we say we are his devotee? तो ऐसे तो संभव Because नहीं we are है। living by our own whims and तो आज fancies, हमारे but we say we संप्रदाय are में his devotee. यही हो रहा है, दूसरे So in संप्रदाय our में तो मुझे sampradaya, ज्यादा ज्ञान नहीं this है, is only what is दूसरे happening. I don't संप्रदाय have में much यही है, knowledge of other sampradayas, but in Gaudiya sampradaya, इतने I see अलग this अलग only happening. विचारधाराएं हैं, So many different points कोई of कुछ view. कहता है कोई कुछ कहता है, Somebody says something, somebody says something हम तो else. देखते रहते हैं, So चलता है ऐसे। I see it always. This is what is going on. ठीक है, प्रार्थना श्लोक। We'll recite prayer verses. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा
कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं हरि ओम तत्सत्।